Okay, good morning. I hope you are doing well. Okay, so we were discussing this carbon sequestration, right? And I have told you that this carbon sequestration takes place in two ways. One is the natural. Okay, so we have discussed all those things, the natural procedures like this. We saw that these terrestrial ecosystems, aquatic ecosystems. Okay, the different soil pools that we carbon pools that we discussed. All those belong to the carbon sequestration. Actually, that is aimed at removing the carbon dioxide from the atmosphere naturally and storing it certain carbon pools for a longer period of time. As simple as that. Okay, but apart from that, as we are facing this issue related to climate change, okay, the effects of climate change are making themselves exposed. Okay, so these effects are there. Now we need to do something extra. Because you see, development needs energy. As simple as that. Okay, you cannot achieve development, you cannot achieve economic growth without harnessing the energy resources that are available. The technological advancement that we have seen in the case of fossil fuels, okay, it is not yet seen in case of the renewable energy sources. You see, the advancements related to solar energy, advancements related to the wind energy, advancements related to the non-conventional source of energy, that is the nuclear energy, advancements related to the biomass related energy, all those things are in nascent phase, in early phase. Okay, there are several other issues like technological advancements, capital related issues, investment की problem है. Apart from that, the supply of these critical minerals we will discuss later on when we will be discussing this energy transition. I will take that up there, critical minerals. While the issue of this critical mineral is also there, because अभी हमारी mining in nascent phases है, processing takes time, technology चाहिए, capital चाहिए, and China is doing well in that particular sphere. Okay, critical mineral case में. So developing countries like India, they cannot compromise their economic growth. Developing countries like in Africa, developing countries like in other Southeast Asia, in South America, they cannot compromise their economic growth for the sake of saving this climate, this environment. Okay, so we need to go for such things कि economic growth भी हो जाए, economic growth के साथ साथ आपकी क्या हो जाए, environment में save हो जाए. So we are focusing on two things. One is the mitigation, the other is the adaptation. Adaptation we have seen, mitigation we have also seen, but this is something that I needed to take up because it is there in the news sometime. Okay, and it is actually the current topic. Okay, this particular sequestration using the engineering methods. Is that clear? So naturally carbon sequester हो रही है. You see these fossil fuels, that is actually sequestered carbon. That is actually sequestered carbon in a different form. Okay. आप LPG देख लो, आप अपना पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, ठीक है, कोल देख लो. All that is sequestered carbon, nothing else. But form has changed. Some other things are there, like hydrogen is now chemically bonded with this carbon. Okay. Apart from that, other trace metals are there, other trace elements are there. वो सब चीजें हैं. But primarily it is carbon sequestered that is there in the earth for millions of years now. Similarly, you see this forests. Okay, that is again sequestered carbon. We have seen mangroves, again that is sequestered carbon. है ना आपके पास? है ना? So these are different channels through which carbon sequestration takes place. But we should not limit ourselves to those things. We need to work on technology also. कि अब technologically how you can sequester the carbon. So this is something that is the way we humans can achieve the carbon sequestration. Okay, we can also achieve carbon sequestration by afforestation, by planting these
प्लांटिंग ओवर दीज डिग्रेडेड लैंड्स। ओके ओके, क्रॉपलैंड्स भी हम क्रॉपलैंड्स में इंश्योर करते हैं कि कार्बन सिक्वेस्टर हो, बट कार्बन सिक्वेस्टर हो रही है शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास, ठीक है। और आपकी जो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, दैट इज एट वेरी एक्सेलरेटेड पेस। इज दैट क्लियर? अब जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है उसको भी तो रिमूव करना है, एंड आई हैव बीन टेलिंग यू दैट दिस द ग्रीन हाउस गैसेज दे स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर longer than the human lifespan. Okay, and since industrial revolution, the concentration of these greenhouse gases has risen. Okay, okay, we have seen the different lifetime of different greenhouse gases, like methane. Methane stays there for 9 to 10 years. Okay, okay, then it gets converted into some other form. Okay, then carbon dioxide, it stays for decades, it stays for centuries also. Okay, and we have also seen their relative global warming potential. Now as the concentration is rising, okay, we need some technological intervention to remove or capture the carbon dioxide at the source itself, or remove the carbon dioxide from the atmosphere. There are two ways. Okay, now try to understand one thing. Now there are two ways. Okay, now there are two ways. One is now there are two ways. मैं यहीं पे करूंगा, then we will take up next slide. Okay, now we will see कि आपके पास है क्या। अब आपके पास दो चीजें हैं। one you capture the carbon dioxide from the source itself, like power plants है आपके, large sources, for example industries आपकी जो है, point sources आपकी क्या है, पॉइंट सोर्सेज। अब स्कैटर्ड सोर्सेज से आप नहीं ना कर सकते। पॉइंट सोर्स मींस अ फिक्स्ड पर्टिकुलर सोर्स जहां से आप इसको कैप्चर कर सकते हो। वन थिंग इज देयर, ओके, यू कैप्चर इट फ्रॉम द सोर्स एंड कंप्रेस इट, लिक्विफाई इट एंड स्टोर इट समवेयर। अब वो स्टोर कहां करना है, आई विल टेल यू, वी विल टेक दैट अप। ओके, वन इज दिस इज द एटमॉस्फेयर। ओके, यू टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ओके, सेपरेट इट, लिक्विफाई इट एंड स्टोर इट समवेयर, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट एटमॉस्फेयर से ऑलरेडी हमारा नेचुरल मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं। तब हम देखेंगे कि सोर्सेज से हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव सीन दिस यस्टरडे। ओके, एक्चुअली आई होप you guys have gone through this. Okay, you have taken note of it. Okay, so this, you see, these are fossil fuels, your biomass. Okay, there are different ways. First is the industrial separation. Okay, you are using the fossil fuels in the industries. Okay, you install some devices there. Okay, some appliances there. You separate the CO2 right from the source. अब उसको एटमॉस्फेयर में नहीं आने देना है। जैसे ही वहां से स्मोक रिलीज हो रहा है, आपका गैसेज रिलीज हो रही हैं, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू टेक द CO2 out, separate the CO2. Okay, separate that CO2, like desulfurization technology in case of thermal power plants. Okay, हम क्या करते हैं, सोर्स पे ही कैप्चर कर लेते हैं एंड देन बाकी गैसेस को रिलीज कर दो, जो आपका इंटरेस्ट है जिसमें, उसको आप सेपरेट कर लो एंड देन यू टेक दैट आउट, कंप्रेस इट एंड स्टोर इट समवेयर। पहला इंडस्ट्री से आपने कर लिया, पहला क्या किया आपने, इंडस्ट्री से, ठीक है। Like in nuclear power plants, sorry, nuclear means thermal power plants. Okay, you go for post combustion, you are burning fossil fuel in the presence of air. In the presence of this particular thing, it tells you that it is being done in the presence of air. Okay, यहाँ पे आपके पास air है, यहाँ पे भी air है. When you provide it with the air, when that fossil fuel is being burnt, you will see that you have to separate the CO2. सब में एक चीज कॉमन आ रही है। सबसे पहले आपने, क्योंकि एक चीज नहीं है आपके पास, एक गैस रिलीज नहीं हो रही, बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं, और आपकी जो गैस ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन सी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आप उसको क्या कर लो, सेपरेट कर लो, ठीक है। अगेन वही कंप्रेशन और स्टोरेज का प्रोसीजर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। यहां से आपके पास जो बाई प्रोडक्ट, मतलब आपके साथ कंबस्शन के साथ कंबस्शन जब होगी, कंबस्शन के साथ आपके साथ हीट और पावर दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको जो चाहिए वो मिल रहा है ना। नेक्स्ट चीज यू सी, देयर इज प्री कंबस्शन। इन सर्टेन केसेस आपके पास क्या रहता है, यू बिफोर कंबस्शन यू प्रोवाइड द लाइक कोल,
से फॉर एग्जांपल कोल, आपने कोल लिया, ठीक है, कोल को आपने इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम एंड वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, यू गो फॉर गैसिफिकेशन, ठीक है, आपने क्या किया, पहले ही यहां से क्या कर दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी, ठीक है, गैसिफिकेशन प्रोसेस में आपके पास फिर बचा क्या, H2 हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ आपके पास, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को भी आप यूज कर सकते हो, लाइक आपका एक और मिशन है हमारा हाइड्रोजन मिशन, जब रिन्यूएबल एनर्जी हम डिस्कस करेंगे तब हम हाइड्रोजन मिशन पे काम करेंगे। तो आपने हाइड्रोजन आपकी जिस तरह फर्टिलाइजर प्लांट्स में यूज होती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज होती है, बाकी प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होती है ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास जहां पे आपके पास हाइड्रोजन यूज हो रही है, ठीक है। तो अब आप उस हाइड्रोजन को भी यूज कर सकते हो ना, ठीक है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट की और आपने बाकी प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन को यूज कर लिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करके इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद अगेन इसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, ओके। वन मोर थिंग इज देयर, ऑक्सीफ्यूल। अब आपने क्या किया, कंबस्शन की, लेकिन कंबस्शन में आपने क्या की, यहां पे जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, अब आपके पास बिल्कुल पहली चीज आपने क्या करनी है, यहां पे एयर से ऑक्सीजन ही सेपरेट करनी है, क्योंकि इस केस में अब क्या होगा, आपके पास बहुत प्योर ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए आपको, प्योर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब देखो एयर में तो ऑक्सीजन है ही, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। आपने वो कंसंट्रेटेड पहले क्या काम किया, आपने एयर से आपने क्या सेपरेट की, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन सेपरेट करने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है, जो फ्यूल ऑफ इंटरेस्ट है आपकी, आपने उसको प्रोवाइड की, कंबस्शन किया, कंबस्शन आपके पास क्या आएगा, हीट और पावर आएगा ना, जब भी कंबस्शन होगी क्या होगा, हीट और पावर। और आपके साथ साथ आपके पास आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट किया, ठीक है, सेपरेट करने के बाद कंप्रेस किया और इसको क्या किया, आगे लिक्विफाई करके अब ट्रांसपोर्ट करना है, इसको क्या करना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है, और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दूसरा क्या काम करना है, इसको स्टोर करना कहीं सेफ जगह पे। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकाल के अपने घर में अपने सेफ में जाकर स्टोर कर दोगे, ऐसा हो सकता है क्या, वी नीड समथिंग, ओके, सम स्पेस जहां पे हम इनको स्टोर कर पाए, एंड दैट शुड बी फिजिबल, एंड ऑल्सो वन थिंग शुड बी देयर, दैट इट शुड स्टे देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, यहां तक क्लियर है। We will write 1 or 2 points on each of the processes, okay, don't worry, okay. Then you just pay attention to one more thing. When we were discussing these different carbon pools, right, when we were discussing these different carbon pools, we discussed, कहाँ यार वो कहाँ है, यहीं पे थे, कहीं था ना, okay, yes, there is oceanic pool, this is a feasible place जहां पे आप कार्बन स्टोर कर सकते हो, we will see, this is a feasible place, okay. Then we have this geologic carbon pool, fossil fuels का एरिया जो है, we can store the carbon there also, that carbon dioxide that you have captured, okay, compressed, liquefied, उसको आप यहां पे स्टोर कर सकते हो। soil carbon pool is not preferable, soil carbon pool is not preferable, okay, but there is one thing, जब हम मिनरल कार्बोनेशन करेंगे उसमें इसका रोल आता है, बट प्रेफरेबली हम इसको यहां पे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जैसे आप यहां पे डालोगे साइल कार्बन पूल में, डेप्थ कहां तक ले रहे हैं हम, 1 मीटर तक, तो ये तो यार इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा ना, समझे आप। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपका काम था कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और उसको सेफ जगह पे स्टोर करना, लेकिन वो फिजिबल नहीं हो पाएगा, अब यहां पे नहीं हो पाएगा ना, समझे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, हाँ, वही जियोलॉजिक एंड ओशनिक पूल, दीज आर द टू, एंड वन मोर थिंग आई विल टेक अप इज सैलाइन एक्विफर्स, ठीक है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस जियोलॉजिक स्ट्रेटा, सैलाइन एक्विफर्स, दीज आर द प्लेसेस वेयर वी कैन स्टोर दिस दैट सेपरेटेड एंड लिक्विफाइड कार्बन, okay. Now you see, when we were discussing these different processes, okay, these are the engineering techniques जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी की, मतलब these are the feasible places जहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। apart from that you can also use that separated and liquefied carbon for mineral carbonation, we will see what is this, okay, and then for the industrial usage as well, for sometimes you can take out the carbon because carbon is required in the industries, आपको चाहिए, ठीक है,
you can use that carbon in those industries also. Is that clear? Is that clear? So you please, लिखा था कल कुछ? Okay, so you please write something. Okay, you please write something on each of the processes, then we will take up. Okay. And one more thing I would like to add here, all the processes that we are discussing, okay, all the processes that we have seen, like this post combustion, like combustion, pre-combustion, oxy-fuel, all these processes you see, these are all processes, some of them are being applied, process like oxy-fuel, okay, these are in nascent stages, these are in nascent stages, अब इतनी advanced नहीं है. In some cases we are applying this first process and the second process and the third process also, but this fourth process you see, it is still in nascent stage, technological advancement इतनी नहीं है. तो इसकी feasibility of deploying this particular process is very little, okay, very less at the present. Is that clear? Is that clear? Only this particular process, first one, second one, third one, some work has been done and these are being deployed at various places. Okay, okay. This fourth one you see, it is still in nascent stages. Okay, okay. So you please write something on each of these. Okay, you're right. We have written this carbon capture and storage, something about this. Okay, okay. You write please, post combustion capture of just one line, just one line. Okay, post combustion capture of CO2 in power plants, post combustion capture of CO2 in power plants is economically feasible under specific conditions, okay. Okay, okay. Post combustion capture of carbon dioxide in power plants is economically feasible under specific conditions, okay, full stop. Pre combustion capture, next you write, okay, pre combustion capture is widely applied in pre-combustion capture is widely applied in fertilizer manufacturing, and in hydrogen production, okay. The third one you write, किसी का कुछ स्किप तो नहीं हुआ, सबका हो गया ना? अमान एंड रोशनी, अभी ठीक है? ओके. प्री कंबस्शन कैप्चर is widely applied in fertilizer manufacturing and in hydrogen production. Aman, do I need to repeat something? Second point. Okay, second. You please write. Pre-combustion capture is widely applied in pre-combustion capture is widely applied in fertilizer manufacturing and in hydrogen production. Okay, done, Aman? Okay, the third one you write, oxy-fuel combustion is still in demonstration phase. Oxy-fuel combustion is still in demonstration phase. Okay, more work needs to be done
to make it cost effective, and deployable, okay, and deployable, okay. Once you develop technology, you need to deploy it, okay. Only you cannot deploy it once it is in nascent phases, okay. Next you write, you see why I am not explaining these particular things in detail. You see what, this is not required, required. You just need an idea, you just need to know these processes, because this is the part of the engineering, okay, okay. और आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हाउ दिस वर्क, व्हाट इज हैपनिंग, ओके. वी कैन नॉट डिस्कस द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड हियर, द डिफरेंट सेपरेटर्स दैट आर रिक्वायर्ड, ओके, ओके, द डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस. कुछ नहीं करना है, ठीक है. हाँ, एक चीज है, मैं एक चीज पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. इफ समथिंग कम्स अप इन द न्यूज़पेपर, ओके, only then you need to work on that. If something regarding these, any of these, sometimes out of curiosity the examiner may ask, but it is like adding to the burden. अगर हम यहाँ पे करते हैं, अगर नहीं आता तो क्यों करना है, समझे, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है. बट समटाइम एग्जामिनर गेट्स क्यूरियस कि पूछ लेते हैं ना, ठीक है. तो वो चीज नहीं होती, इस तरह से मोस्टली नहीं होता, लेकिन कभी एक आधा क्वेश्चन अगर प्री में आ जाए ऐसा, तो अब मेंस में थोड़ी पूछेगा कि व्हाट इज ऑक्सीफ्यूल कंबस्शन, ऐसा थोड़ी कोई पूछेगा आपको. इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, ओके, प्लीज एलेबोरेट. तो यू कैन मेंशन दीज डिफरेंट वेज देयर, यू कैन मेंशन द स्टोरेज ऑप्शंस, ओके, ओके, एंड व्हाई डू वी नीड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. दैट्स इट, ओके. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. ज्यादा डेप्थ में जाने की जहां पे जरूरत होती है वहीं पे जाना है, हर जगह डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि शार्प बाउंड्री नहीं है. इफ यू स्टार्ट डिस्कसिंग दिस इंडस्ट्रियल सेपरेशन, इफ यू स्टार्ट इन दिस डिस्कसिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेशन, इट रिक्वायर्स अ होल न्यू अप्रोच. क्या है क्या नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट इज वी नीड टू नो व्हाट आर द डिफरेंट वेज एंड हाउ कैन वी स्टोर दैट सेपरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? Is that clear? And what is the role it is going to play? What is the role it is going to play? What are the constants? What is the role it is going to play? Is that clear? Okay. Next you write, next topic, okay. यहाँ तक clear है सबका? Okay. Okay. So please, we will discuss the storage options. What are the storage options? Okay. Now once we have separated their carbon dioxide, ठीक है, ले ली, अब घर पे जाके नहीं रख सकते ना, we need something, okay. What are the different storage options? Okay. What are the different storage options? Okay. The first option is geological storage options. The first one is geological storage options, okay. Geological storage options, okay. The first under this geological storage option is depleted oil and gas reserves. Depleted oil and gas reserves, okay. Second is use of CO2 in enhanced coal bed methane recovery. Use of CO2 in enhanced coal bed methane recovery, okay. You please write, okay, ऐसा ही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, okay. Third one, deep saline formations onshore and
offshore. Okay, deep saline formations onshore and offshore. Okay, deep saline formations onshore and offshore. Okay, and here I want you to add something. Okay, then you write something about this deep saline formations, then we will take up. Okay, I will make you write one more point after that. Okay, you please write something. लिख लिया सबने यहाँ तक ना? Okay, please write within the brackets. Okay, deep saline formations are sedimentary rocks. Deep saline formations are sedimentary. Deep saline formations are sedimentary rocks. Are sedimentary rocks saturated with formation waters. Saturated with formation. Okay, saturated with formation waters. Saturated with formation waters containing high concentration of dissolved salts. Containing high concentration of dissolved salts. Okay, okay, salts, dissolved salts. Okay, dissolved salts. Okay, further you write full stop. They are widespread. नहीं ब्रैकेट में ही चलेगा अभी. They are widespread and contain. They are widespread. Okay, they are widespread and contain enormous quantities of water. And contain enormous quantities of water that are unsuitable for agriculture. And contain enormous. They are widespread and contain enormous quantities of water. Okay, quantities of water that are unsuitable for agriculture. Or human consumption. Okay, bracket close. That's it. Okay, and one last point you write. Use of CO2 in enhanced oil and gas recovery. This one last option. Okay, use of CO2 in enhanced oil and gas recovery. Okay, okay, so these are the different options that are there. You see sir, these depleted oil and gas reserves, once you take out the oil, the gas from these reserves, from these fossil fuel reserves, they are there empty है ना, कुछ नहीं है उनके अंदर, नहीं है ना. Now you can store that captured CO2 in those places. Okay, second is use of CO2 in enhanced coal bed methane recovery. Where there is this coal, where there is coal reserve, ठीक है, there is presence of coal bed methane also. Coal bed methane. Okay, the gas that is the methane that is associated with the coal reserves. Okay, so you can use that CO2 to recover that coal bed methane. CO2 वहीं पे रहेगी. You will get, it is like, you try to understand this. It is like you started injecting CO2 into that coal reserve. ठीक है. Now CO2 being liquefied, denser रहेगी आपके पास. ठीक है. अब आपके पास क्या रहेगा? जो मीथेन है, it will start coming up. उसकी एक्सट्रैक्शन इनहेंस हो जाएगी. अब उसकी एक्सट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इनहेंस हो जाएगी. जो आपकी CH4 है ना, मीथेन, कोल बेड मीथेन जो आपके पास है, अब आप इसकी एक्सट्रैक्शन को इनहेंस कर सकते हो यूजिंग द लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड. इज दैट क्लियर? दैट इज द सेकंड मेथड एंड इट विल स्टे देयर. अब ये वहां पे जाके रहेगी, मीथेन आपके पास वापस आ जाएगी. दो सम लीकेज कैन बी देयर, बट इट इज अ फिजिबल ऑप्शन.
but it is a feasible option. Leakage of CO2 can be there, okay? In all the cases leakage of CO2 can be there, okay? It can be there, okay? Please keep that in mind कि एक डाल दी सारी नहीं, there can be some leakage, ठीक है? That's why large scale adoption नहीं हो रही टेक्नोलॉजीज की इनकी, ठीक है? There can be some leakage, but it is a feasible option. Similarly, in the deep saline formations, okay, what are these saline formations? These are like aquifers. These are like aquifers with concentrated with high amount of dissolved salts. These are aquifers with high amount of dissolved salts that are there in the crust. So you can use these because once you see these are very salty, okay, there is very high concentration of salts, okay, so that water is not usable for human or agricultural purposes. नहीं कर सकते ना यूज. अगर पानी वैसे यूज करना होता तो हम ओशन का पानी लेके तो यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वी आर यूजिंग दैट बट वी नीड टू फिल्टर, ठीक है? वी नीड टू रिमूव दैट ऑल सॉल्ट. तो दैट इज अगेन कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव है. तो फिर तो हम सारी दुनिया की प्रॉब्लम पानी कैसे सॉल्व कर लेते हैं ना कि समुद्र आपके पास इतना है, अब आपके पास मान लो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, पानी से रिलेटेड दिक्कत है, ठीक है? इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने समुद्री पानी को यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब दिस सॉल्ट वाटर, ओके? इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है. अब इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? अब इंडिया के पास भी तो 3 ओर से समुद्र ही है. इंडियन ओशन एक साइड है, नीचे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, कर लो ना यूज. मराठवाड़ा की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ठीक है? जितना भी एरिया आपके पास ड्रॉट प्रोन है सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करो. इतना तो समुद्र आपके पास पड़ा हुआ है, क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज इट रिक्वायर्स कैपिटल, इट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, और जो आपके पास बेनिफिट्स होंगे कम है एज कंपेयर टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड. इज दैट क्लियर? सो अब आपके पास डीप सैलाइन फॉर्मेशंस है, आपको नहीं करना उनको यूज, रहने दो. तो उनको यूज कर लो ना, कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करके उनको स्टोरेज ऑप्शन बना लो, कार्बन डाइऑक्साइड का बना लो ना. सेम इज द केस इन दिस पर्टिकुलर थिंग, यूज ऑफ CO2 इन एनहांस्ड ऑयल एंड गैस रिकवरी, ठीक है? अब आप ऑयल एंड गैस रिकवरी जो है आपकी, दिस कैन बी इनहांस्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड. जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि यू पुट दैट CO2 देयर, आपके पास इनहेंस हो जाएगी बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रेशर बैलेंसेस. कुछ नहीं है, वंस यू स्टार्ट इंजेक्टिंग समथिंग समवेयर, ओके, तो दूसरी चीज बाहर आने की कोशिश करती है. इज दैट क्लियर? ठीक है? तो दैट इनहेंसमेंट कैन बी डन यूजिंग दैट CO2. So these are all the feasible options, feasible geological options that can be used for the storage of that captured CO2, that separated, compressed, liquefied CO2. Is that clear? Now one thing you should be able to understand here, कि once you have captured that CO2, you have actually made it possible कि वो CO2 एटमॉस्फेयर में ना जाए जहां पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग. इज दैट क्लियर? और उसके पास आप अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हो कि कहां कहां पे आप उसको स्टोर कर सकते हो. बट जितना आसान बोलने में लग रहा है इतना आसान है नहीं. इट रिक्वायर्स अगेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी. देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू इट, मे ऑल्सो लीड टू द लोकल अर्थक्वेक्स, ओके? क्योंकि आपने जियोलॉजिकल स्टेटा पे काम करना है. इट इज नॉट दैट इजी. It is not that easy. Is that clear? So, but it is somehow we are working. Not me, not you. Okay. Obviously, several organizations, several R&D organizations, they are working on these methods. Is that clear? Because in the near future, कहीं नहीं लग रहा कि we will shift to the renewable energy fully. It may take some time, and जब तक आपकी transition complete ना हो, we need both economic growth as well as the sustainability. Is that clear? That's why so much work is being done on all these feasible options. Is that clear? Okay. So you Aman and Roshni, ठीक है? कुछ सेंस बन रही है ना? ठीक है. So next you write oceans. These are also the feasible storage options. Okay. These are also the feasible storage options, okay? And in oceans, you see how you can store this carbon dioxide, okay? The first is dissolution type. And the second is, okay, and the second is lake type.
second is the lake type. Okay, dissolution type and the lake type. These are the two types that are there. Okay, dissolution type and the lake type. Okay, dissolution type ocean storage अगर elaborate करना चाहते हो, and the lake type ocean storage. Now you understand first होता क्या है. ठीक है, because ocean is the carbon pool. Ocean is the carbon pool. Please listen. Okay, you see this ocean is the carbon pool. There are two things. When we will discuss the topography of the ocean, okay, in geography, okay, hopefully after completing the environment, okay, when we will discussing this ocean topography, okay, OBR, ocean bottom topography, you see दिस इज द कंटिनेंटल शेल्फ वगैरह, वो सब चीजें नहीं डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, बट एक चीज समझ लो, दिस इज द ओशनिक फ्लोर, दिस इज द ओशनिक फ्लोर, दिस इज ऑल्सो द ओशनिक फ्लोर. ओके, सब ओशनिक फ्लोर है. देयर आर टू थिंग्स. You bring that carbon dioxide, that sequestered carbon dioxide, and you simply drop it here. Okay, once that CO2, okay, that CO2 obviously using the pipes, ships, or some other platform. Okay, you bring that CO2, you put it here, that CO2 will get dissolved in the oceanic water. इसमें क्या हो जाएगी, अब ये dissolve हो जाएगी. That is the dissolution type. That is the dissolution type. Is that clear? The second is, बट ये डिसोल्यूशन टाइप कब तक आएगी, फॉर अ सर्टेन डेप्थ, बियॉन्ड दैट डेप्थ लेक टाइप्स ओशन स्टोरेज विल वर्क. नाउ यहां तक मैंने लिया. अब अगर इसी CO2 को मैं यहां पे लेके आऊं, ठीक है, अगर इसी CO2 को मैं यहां पे लेके आता हूं से, अब मैंने CO2 को यहां पे लेके आना है. नाउ एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस CO2, दिस लिक्विफाइड CO2 विल रिमेन एज सच फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब आपने जो लिक्विफाइड CO2 लाई थी ना, लिक्विफाइड CO2 लाई थी, डेंसिटी कंट्रास्ट है किसके बीच में, लिक्विफाइड CO2 के बीच में और ओशनिक वाटर के बीच में डिफरेंट डेंसिटी है ना. ठीक है, अब जो आपने बाहर से CO2 लाई थी, नो दैट विल रिमेन हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अ लेक इन ओशन, like a lake in ocean. Please try to understand that. Like a lake in ocean, it will stay there. It will have its own boundaries जहां पे ये स्टोर रहेगी. Over a period of time, it will get dissolved into the oceanic water. But for a period of time, ठीक है, for a certain length of time, okay, it will stay there as a lake. That's why we call it as a lake type ocean storage. Is that clear? Now you see, बोलना तो बहुत आसान है, but one thing that we have already discussed is the ocean acidification. One thing that we have discussed already is the ocean acidification. इतना ही आसान है तो सारा समुद्र को लोड कर दो ना कार्बन डाइऑक्साइड साइड उठा के. अरे समुद्र ऑलरेडी ही काम कर रहा है दैट इंक्रीज कंसंट्रेशन को उसको मेंटेन करने में, वो बैलेंस अचीव करने में. उसकी pH ऑलरेडी डाउन हो रही है, दो बाय अ वेरी लिटिल फ्रैक्शन, ओके, दो बाय अ वेरी लिटिल अमाउंट, बट हो तो रही है ना, एंड दैट हैज इट्स रिपरकशन. तो अगर आप इसको फिर से CO2 को और ज्यादा डालोगे इसमें, ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज होगी ना. आपके पास कोस्टल इकोसिस्टम्स, so they will be at risk. Oceanic ecosystems, they will be at risk. Several plants, several organisms, they will be at risk. Coastal communities will be at risk, and again there will be leakage of this dissolved CO2 to the atmosphere over a period of time. तो जिस चीज को आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उसी चीज को आप क्या कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो. बोलना आसान है ना, ठीक है. सो प्लीज राइट वन लाइन ऑन दीज टू. ओके, अंडर दिस यू राइट जस्ट वन लाइन. ओके, CO2 रैपिडली डिसॉल्व्स इन ओशिनिक वाटर. सिर्फ एक बात, ठीक है, CO2 रैपिडली डिसॉल्व्स इन ओशिनिक वाटर अंडर दिस, ओके, डिसोल्यूशन टाइप. ओके, और कुछ नहीं लिखना ज्यादा. CO2 रैपिडली डिसॉल्व्स इन ओशिनिक वाटर. ओके, बस एक ही लाइन. नेक्स्ट लिखो, लेक टाइप ओशन स्टोरेज में एट डेप्थ्स बिलो 3000 मीटर, एट डेप्थ्स बिलो 3000 मीटर, एट डेप्थ्स बिलो 3000 मीटर्स. ओके, एट डेप्थ बिलो 3000 meters, CO2 is denser than water
CO2 is denser than water and is expected to form a lake that would delay dissolution of CO2 into surrounding environment. Okay. Nothing else. Okay. Just one point. Okay, not in detail, but you should be able to understand the concept. You tell me, are you able to understand the concept or not? Okay. Now there are two more options that we can go for. One is the mineral carbonation. Okay. And the other is industrial use. But you please keep them separated. Okay. पहले एक ही लिखना, mineral carbonation लिखो, then I will take up both. Okay. Write something about this mineral carbonation. Okay. It is easy यार, कुछ नहीं है. If you know the basic chemistry means 10th level chemistry, 8th level की भी चलेगी. If you know that much of chemistry, बहुत सिंपल है समझना इसको. ठीक है, पढ़ी है ना केमिस्ट्री, सबने पढ़ी है यार, साइंस तो सबको पढ़ाते हैं 10th तक. It is transformation of CO2 into calcium carbonate. And magnesium carbonate and it is the transformation of CO2 into calcium carbonate, magnesium carbonate and other minerals in the form of stable carbonates. Okay. And other minerals in the form of stable carbonates. Okay. So you see, when we were discussing this thing yesterday, okay, where is that here? Yes. When we were discussing this yesterday, carbon sequestration, okay, the natural processes, engineering processes हमने देख लिया ना. Now chemical transformation. Under chemical transformation, we had seen this mineral carbonation. And I told you that these mineral certain elements are there, like calcium है आपका पास, magnesium है, ठीक है, okay, they largely form bond with the carbon, and the resultant compound that is formed is the magnesium carbonate or the calcium carbonate. Is that clear? ये naturally present आपके पास, but you can use that captured CO2 to form these compounds. Okay, and once these compounds are formed, these are stable. Okay, तो वो जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करनी थी कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, तो वो चीज आपने क्या कर ली, काउंटर कर ली. नाउ दैट विल रिमेन देयर फॉर सम टाइम, ओके, इन द फॉर्म ऑफ दीज कार्बोनेट्स. Is that clear? And one last we will see industrial usage. Okay, now you write under industrial usage, industrial use of captured CO2 as a gas or liquid, or as a feedstock in chemical processes, in chemical processes that produce
that produce valuable carbon that produce valuable carbon containing products are possible, but this process is not expected to contribute to significant abatement of CO2 emissions. Significant abatement of CO2 emissions. Abatement लिखा है मैंने. Significant abatement of CO2 emissions. For example, full stop के बाद एक example डाल दो. For example, feeding captured CO2 to algae. Feeding captured CO2 to algae to produce biofuels and other products. Okay, so but this industrial process is not that much relevant. Okay, so the major processes that you see, mineral carbonation and the two that we have discussed. Okay, the major storage options, geological, oceanic and the mineral carbonation. This is there, but it is not that much relevant. Okay, as simple. बाकी कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है. But I want you guys to do one thing on your own. At least you should be able to find the issues that are related to the carbon sequestration. One is, I am just telling you if you want you can write technological issues. Technology is still in nascent phase. Okay, and there is concentration of these technologies with the developed countries. Developing countries lag behind in terms of technology, lag behind in terms of technology, and also they do require tech transfer from the developed countries, and also they need capital to adopt the technology. Is that clear? पहली बात spatial disparity है in terms of technology. And you see, lately the developing countries like India, they are significantly contributing to the emissions of greenhouse gases, and they do need this technology to capture and store the carbon. Okay, second, it is capital intensive. Because you need capital for research and development, you need capital for technological adoption, and also you need capital for scaling up the use of technology. Is that clear? So feasibility remains very low. Is that clear? The next is problem related to the storage. Okay, storage में क्या दिक्कत है? Once you start injecting that captured CO2 into the geological strata, there may be some leakage, which is detrimental to the very interest for which we are working. We are working to reduce the CO2 emissions. When there is leakage, तो आपका क्या हो जाएगा? ये not feasible. ठीक है. Problem related to the infrastructure. Is that clear? You need infra to transport. You need infra to liquefy the carbon dioxide. Is that clear? That is again
not scalable, okay, that there will be disparity, especially, okay, developed countries will lead, developing countries will lag behind, but we need holistic efforts to mitigate the effects of climate change and also to reduce the greenhouse gas emissions. Is that clear? Next you can write is the issue related to these storage options. Like if you are looking at storing the carbon dioxide in the ocean, which is already experiencing the oceanic acidification, तो environmentally तो feasible नहीं ना है, नहीं है ना, ठीक है. So these are all issues, and in addition to that you can also add when while discussing the geological strata, this geological storage option, there can be incidences of earthquakes, ओके, ठीक है. आपको पाइपलाइंस वो करनी पड़ेंगी, इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, ठीक है, बिल्ड करनी पड़ेंगी, आपको पेनिट्रेट करने पड़ेगा अर्थ क्रस्ट में, तो दैट मे कॉज सम लोकल जियोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस, इज दैट क्लियर? टेक्नोलॉजिकली हो गया, स्टोरेज ऑप्शन से रिलेटेड हो गया, लीकेजेस हो गई, कैपिटल इंटेंसिव नेचर हो गया, लेक ऑफ scaling up feasibility related to the scaling up of the technology. All these are the issues that are associated with the carbon capture and storage. Is that clear? You must be able to make sense of all these things now. Okay, इतना तो बनता है, ठीक है, because you have discussed all these things in so much detail. Now you should be able to link all those concepts, and that's it. ये clear है यहाँ तक? ठीक है. Okay, you guys out there, Aman and the other who is she? Roshni. Okay. So we will take up one more thing. I feel like that should be taken up. Okay, we will do that. Okay, we will discuss geoengineering. Okay, geoengineering. I want you, okay, you please write some homework. Okay, one is, these are all carbon sinks also. Okay, ocean is a carbon sink, that you see terrestrial ecosystems जो हमने कल डिस्कस किए थे वो सब carbon sinks आपके पास, ठीक है. That fossil fuel जो आपका था, that also carbon sink, but now that is a carbon source. That is a carbon source because of the anthropogenic interventions. और अभी प्रेजेंट में वो काम नहीं कर रहा. वो कार्बन पूल तो है हमारा, कौन सा, फॉसिल फ्यूल्स वाला, लेकिन इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो अभी वो फिजिबल नहीं है. ओशन हो गया आपका, ठीक है, बाकी आपका सॉइल हो गया, ठीक है, बाकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हो गए, कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम्स हो गए. दीज आर ऑल योर कार्बन सिंक्स. I want you guys to work on these carbon sinks because you know each and everything now. Okay, please write. Okay, you have to work on carbon sinks. Okay, ये सब कार्बन सिंक्स हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको खुद से 2-4 लाइनें लिखनी है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब हमने डिस्कस किया. ओके, कार्बन सिंक्स. द नेक्स्ट, माइक्रो कार्बन सिंक्स. ओके, थोड़ा तुम भी पढ़ोगे ना, ऐसे नहीं पढ़ोगे फिर मेरे भरोसे बैठे रहोगे. माइक्रो कार्बन सिंक्स. ओके, कार्बन सिंक्स हो गया, माइक्रो कार्बन सिंक्स हो गया. बस इतना ही काम करो, बाकी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है. इन पे थोड़ा सा काम करो, क्योंकि मैंने सब डिस्कस किया है और वही कार्बन सिंक्स हैं जो हमने पढ़े हैं. वही क्या है, कार्बन सिंक. कार्बन सिंक इज समथिंग दैट एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर मोर कार्बन देन इट रिलीजेस. एज सिंपल एज दैट, बात खत्म, ठीक है. और ओशन भी है आपका, वो सब हमने किया हुआ है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं है. ओके, नाउ वी विल टेक अप वन मोर थिंग, दैट इज द जियो इंजीनियरिंग. ओके, होता क्या ना कि जब इंसान थोड़ा सा रेशनल है ना, ठीक है, इंसान के साथ दिक्कत पता क्या है, ह्यूमंस हैव दिस एबिलिटी टू थिंक, and now this geoengineering is the product of that thinking. Okay, it's like we can alter the earth's weather. So as simple as, try to understand the concept. There are multiple approaches. One approach that we have already discussed is this carbon capture and storage. Under this geoengineering, okay, one approach that is carbon capture and
अरे geoengineering is a new topic. Please try to understand that geoengineering is a new point. Now we have shifted to the next topic. Okay, carbon capture and storage that we have discussed, okay, is one of the approaches in geoengineering. It is one of the approaches. Okay, you need not to write anything, you just put the heading there. Okay, geoengineering, and baki I will take up. Okay, this carbon capture and storage, you see, this is one of the method that has been discussed under the geoengineering. We can alter the Earth's climate, we can alter the we can reduce the greenhouse gas emission, we can also increase the albedo of the Earth. दो चीजें. दूसरा, increasing the albedo of the Earth, as simple as that, और कुछ नहीं. You see, temperature is rising, global warming is there, ठीक है. And once you increase the albedo of Earth, okay, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना. Okay, you please try to understand this geoengineering. Actually, you guys know that Earth is experiencing the global warming. Okay, मिटिगेशन एडेप्टेशन जो चीजें हैं, मिटिगेशन में ये आपका कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है, ये भी आपका मिटिगेशन रिलेटेड ही एस्पेक्ट है. लेकिन अब इसमें है कि आपका ये थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है. अब आपने अर्थ का एल्बिडो इंक्रीज करना है, मींस कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को और ज्यादा रिफ्लेक्ट करवाना है जितना वो नेचुरली हो रही है. अब रिफ्लेक्शन के क्या क्या सोर्सेज हैं आपके पास, आप क्या कर दो, क्लाउड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लो. एक और चीज हमने डिस्कस की, एरोसोल्स, यह है, याद है कुछ? तो एरोसोल्स एक्ट एज रिफ्लेक्टर एज वेल एज एब्जर्बर, बट लार्जली इफ यू सी aerosols work, okay, depends upon the relative absorption or reflection, but largely जो effect देखा जाता है, impact, that is on the cooling side. Increasing concentration of aerosols in the atmosphere leads to cooling. Though there is some absorption of the long wave radiations as well as the incoming solar radiations, but जो relative effect हमें देखने को मिलता है, net result देखने को मिलता है because of these aerosols, and I made you write one point there कि जो net effect देखने को मिलता है, that leads to the cooling of the Earth's atmosphere. जब हम aerosol डिस्कस किए थे ना, प्लीज गो थ्रू द व्हाट यू हैव रिटन. यार इतना लिखने का क्या फायदा फिर, ठीक है. ट्राई टू रिलेट दीज थिंग्स. सो वन एग्जांपल इज दैट somehow you increase the cloud cover, that cloud cover will also lead to albedo, reflection of the incoming solar radiation. Okay, you do something with the stratosphere, we will discuss क्या करना है stratosphere में, that will also reduce the incoming solar radiations. Okay, one more very interesting research was there, that you sprinkle the diamond dust in the atmosphere. Okay, diamond dust. Okay, what is the this property of diamond? Reflection. Okay, you sprinkle the diamond dust, that will lead to more reflection, more albedo, and that will reduce the incoming solar radiation, and the earth will experience the cooling. There are other things like, you please work on altering the genes of plants. Okay, try to understand these concepts. Okay, ये अब हो गया आपका albedo वाला. You please increase the photosynthetic ability of the plants. Okay, you alter the genes, increase their photosynthetic ability, and once they will go for enhanced photosynthesis, what will happen? They will absorb the carbon dioxide from the atmosphere. Once that carbon dioxide is absorbed, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यार लीडिंग काज है ना ग्लोबल वार्मिंग का. तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की enhanced ability of the plants lead to more absorption of the carbon dioxide from the atmosphere, तो अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, they will come down. So that is again there.
You do something with the ocean. Okay, you do something with the ocean, because in the ocean you see there are phytoplanktons. There are phytoplanktons. Provide these phytoplanktons with more nutrients. Once you provide them with the more nutrients, they will grow more. They will grow. The simple सी चीजें यार. They will grow more. Once they will grow more, they phytoplanktons, they will also lead to photosynthesis. They will perform this photosynthesis. Na, they are performing. But once their concentration, okay, once their concentration increases, okay, तो photosynthesis enhance हो जाएगी, होगी ना. तो again you take out the carbon dioxide from the atmosphere. But you need to do something. Naturally वो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा काम करवाना उनसे. नेचुरली देखो होता है क्या, आप लोग नहीं पढ़ रहे, मुझे पता नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कम मेहनत कर रहे हो. अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं आपका डेली टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूं. दूसरा, मैं आपको होमवर्क दूं और नेक्स्ट डे जिस तरह स्कूल में बच्चों को चेक करते थे कि ले अपनी कॉपी, ठीक है, तो मैं चेक करना स्टार्ट कर दूं, वो ऑप्शन है मेरे पास. तो अब ऐसी इंटरवेंशन से होगा क्या, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी. लेकिन उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा ना. सेम इज द केस हियर. जो नेचुरली हो रहा है उसको एनहेंस करवा दो, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए. दैट इज द जियो इंजीनियरिंग. दैट इज द जियो इंजीनियरिंग. एंड इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द concentration of carbon dioxide, okay, increasing the albedo, and to achieve the resultant cooling, okay, to decrease the temperature that is there in the atmosphere. Is that clear? You please write one or two one point on this. Okay, अमान ठीक है? Okay. जियो इंजीनियरिंग रेफर्स टू, बेटा मैंने जब बोला है यार कि आपको जब न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, यू प्लीज गो टू द नेक्स्ट पेज. वाई यू स्टिक टू दैट हैबिट कि वहीं पे स्टार्ट करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम नेक्स्ट पेज पे मूव नहीं करेंगे. व्हेन वी आर डिस्कसिंग द न्यू टॉपिक, इफ यू आर इवन लेफ्ट विद द मोर देन हाफ ऑफ द पेज, यू प्लीज स्विच टू नेक्स्ट पेज. आई हैव बीन टेलिंग यू दिस थिंग फॉर सो मेनी डेज नाउ, एंड यू आर स्टिकिंग टू दैट पर्टिकुलर हैबिट कि वहीं पे स्टार्ट करना है, जहां पे हमने पिछली लाइन छोड़ी है, वहीं पे ब्लॉक करेंगे और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक. और ये गंदी आदत है. और ये क्या है, गंदी आदत इसलिए है, पेपर में नहीं हो, क्लास में हो. ऐड कर सकते हो, वहां पे कुछ स्पेस छोड़ सकते हो, डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. अगली बार जब पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि वही टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहा है ना. फिर बाद में जाके ना तुम कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन में समझ पाओगे और ना तुम जियो इंजीनियरिंग को समझ पाओगे. ठीक है, ओके, प्लीज. जियो इंजीनियरिंग रेफर्स टू any large scale attempt. Geoengineering refers to any large scale attempt. Geoengineering refers to any large scale attempt to alter the लिख लिया सब नहीं यहाँ तक. To alter the Earth's natural climate system to counter the adverse effects of global warming. To counter the adverse effects of global warming. To counter the adverse effects of global warming. Full stop. Global temperatures are already about. Okay, no, please stop कर दो यहीं पे. You can add that point from there. जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि how much temperature has increased. No, you will do that. Okay. You do ये यहाँ पे stop करना, कहाँ पे? Effects of global warming. Now you can add one data point from जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि how much of the temperature has risen compared to the pre-industrial level. You will add that. I'm not going to do that. ठीक है, I am not going to do that. You add that data point here. Okay, please write. Add the data point. लिखो यार. Add the data point. Add the data point. Add the data point. ADD. Okay, add the data point
related to rise in global temperatures, rise in global temperatures since industrial revolution. Okay, 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 revolution. Okay, that point is there. Okay, how much of the temperature has risen? Okay, geoengineering techniques, geoengineering techniques. Okay, what are the different techniques that are there? लिखो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स, लिखो जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स broadly fall into, geoengineering techniques broadly fall into two categories, broadly fall into two categories. पहला लिखो सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, पहला लिखो सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, एंड दूसरा लिखो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल. ओके ओके ओके, I will come to this solar radiation modification later on. Before that, I want you guys to take note of one thing कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो पढ़ा है हमने, प्लीज लिसन, जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज हमने पढ़ा है दैट कम्स अंडर द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक, दैट कम्स अंडर द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक्स. इज दैट क्लियर? ओके, प्लीज पे अटेंशन, और वो सब चीजें आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, डोंट वरी. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल दो चीजों से होता है. एक तो होता है आपका डायरेक्ट एयर कैप्चर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कैप्चर एट सोर्स, कैप्चर एट सोर्स. कैप्चर एट सोर्स का सारा काम हमने कर लिया है, कैप्चर एट सोर्स का सारा काम हमने कर लिया है, ठीक है. कुछ बच्चों को ना आई फील लाइक कि कुछ बच्चे दे फाइंड इट डिफिकल्ट, अगर पूरा का पूरा लेक्चर ही, खैर अंग्रेजी हमें भी उतनी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन अगर पूरा लेक्चर ही इंग्लिश में डिलीवर कर दिया जाए, ठीक है, आई फील लाइक कि कुछ बच्चों को डिफिकल्टी होती है, सच बताना, किसी को होती है. अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है, शर्माने की कोई बात नहीं है. आई कैन यूज बोथ द लैंग्वेजेस, बट प्रेफरेबली जब बात आएगी कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड, आई विल गो फॉर कि इंग्लिश सही रहे. क्यों? क्योंकि टर्म्स नहीं ला सकता ना मैं. अब मैं कार्बन कैप्चर को हिंदी में क्या बोलूं? मैं ये बोल सकता हूं कि कार्बन कैप्चर एक तरीका है. अब मैं कार्बन कैप्चर को हिंदी में क्या बोलूं, मुझे वो नहीं ना पता है, ठीक है. अब इतना हिंदी मैं भी नहीं जानता हूं, ठीक है, या हिंदी भी कहां जानते हैं यार, हम मिक्स बोलते हैं, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, ठीक है, डोगरी, सब जो चलता है. तो प्लीज आई विल ट्राई टू डू दैट. ओके, डोंट वरी. ओके, आई फील लाइक कि बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, कभी कभी पूरा लेक्चर इंग्लिश में गुजर जाता है, ठीक है. आई विल ट्राई टू मॉडिफाई दैट हैबिट. ओके, I will try to do that. Okay, don't worry. Now you have two techniques, geoengineering techniques, that is solar radiation modification and the carbon dioxide removal. We have to work on this solar radiation modification. Okay, but in this carbon dioxide removal we have discussed two things, that is the capture at source and direct air capture. Okay, capture at source we have seen. What are the different ways? अभी जो किया यार कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, एंड नाउ यू हैव द डायरेक्ट एयर कैप्चर. अब डायरेक्ट एयर कैप्चर के अंदर, ठीक है, एक तो आता है आपका नेचुरल रिमूवल. क्या आ गया आपका? नेचुरल रिमूवल, जो ऑलरेडी हो रहा है, एंड सम अदर टेक्निक्स लाइक ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है. और नेचुरल रिमूवल में आप उसको क्या कर सकते हो? इनहेंस कर सकते हो. क्या कर सकते हो? इनहेंस करो उसको. हमने उसी पे करना है कि हम नेचुरल रिमूवल को कैसे इनहेंस कर सकते हैं.
हम नेचुरल रिमूवल को इनहेंस कैसे कर सकते हैं? ओके, हम नेचुरल रिमूवल को इनहेंस कैसे कर सकते हैं? ओके, अरे बोल दिया करो ना कि सर अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बोल दिया करो, ठीक है, शर्माना नहीं है। मैंने कहा था ना भेड़ चाल नहीं चलनी है, ठीक है। एक्चुअली फ्यू स्टूडेंट्स फाइंड इट कि हिंदी नहीं ठीक है, कुछ बोलते हैं अंग्रेजी ठीक नहीं है, फिर यही है कि दोनों चीज़ें यूज़ कर लो, जहाँ जो मन भरेगा। क्या रणधीर, यही हो सकता है ना, है ना, और कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने पास क्या है बाकी? आप कोई बोलेगा पंजाबी बोलो, पंजाबी नहीं बोली जाती यार। ओके, यहां तक ठीक है? ओके, नो ये नहीं करवाऊंगा, इसमें थोड़े से पॉइंट्स लिखवा दूंगा, आप उनको एडजस्ट कर लेना। अंडर दिस डायरेक्ट एयर कैप्चर नेचुरल रिमूवल, इनहेंसिंग द नेचुरल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लीज राइट। पहला लिखो इनहेंसिंग द, पहला पॉइंट लिखना, पहला टेक्निक हम जो डिस्कस करेंगे, कुछ मेथड्स, इनहेंसिंग द नेचुरल रिमूवल प्रोसेसेस of carbon dioxide, enhancing the natural removal processes of carbon dioxide, पहला पॉइंट, पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। अरे नेचुरल रिमूवल में आप लोग अब प्लांट थोड़ी बन जाओगे, नहीं बनोगे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन enhance the process, you can make it more efficient. Okay, so under this natural, enhancing the natural removal processes, okay, I will take up the first one, that is you write artificial upwelling. Okay, कैसे करेंगे इसको? आर्टिफिशियल अपवेलिंग, और जो जिन्होंने मेरे साथ जियोग्राफी का काम किया है, वो जानते हैं अपवेलिंग क्या होती है। अंडर दिस फर्स्ट जो मैं डिस्कस करूंगा, आर्टिफिशियल अपवेलिंग, अंडर दिस यू राइट artificial upwelling involves transporting nutrient rich deep ocean water. Artificial upwelling involves transporting nutrient rich deep ocean water, क्या लिखा है मैंने? Artificial upwelling involves transporting nutrient rich deep ocean water, okay, to the sea surface by pumping it or through other artificial methods, full stop, full stop. The idea is that this will result in increased phytoplankton growth. ओके, आमिर, फाइटोप्लैंक्टन की स्पेलिंग ये है, गलत नहीं लिख लेना। फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, ओके। which will absorb more CO2, okay, full stop. The absorbed CO2
सॉरी द एब्जर्ब्ड CO2 नहीं करना, द एब्जर्ब्ड कार्बन करो। ओके, द एब्जर्ब्ड कार्बन, CO2 काट देना, ठीक है। द एब्जर्ब्ड कार्बन, एब्जर्ब्ड ED, ओके, एब्जर्ब्ड कार्बन then will be stored for long term when the dead phytoplankton biomass sinks to ocean floor, when the dead phytoplankton biomass sinks to ocean floor. Okay, ओके। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है, यानी फिर ज्यादा हिंदी हो गया है, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है, ये क्या हो गया, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है, हाँ, थोड़ा सा भी ज्ञान है अगर कल का, इफ यू कुड रिकॉल, ओके, व्हेन वी डिस्कस दिस ओशनिक कार्बन पूल, याद आया कुछ, याद आया कुछ? नो, दैट प्रोसेस विल बी इनहेंस्ड थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशंस। ओके, अब आपको फाइटोप्लैंक्टन ने जो काम करना था पायल, अब वो इनहेंस कर दिया आपने, क्या कर दिया, इनहेंस कर दिया। अब जो उनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्बिंग द कार्बन, दैट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। नो, जब वो अब अपनी एंड ऑफ लाइफ पहुंचेंगे, दे विल, गुजर जाएंगे ना बेचारे, दे विल बी डिपॉजिटेड एट द ओशन फ्लोर एंड दैट कार्बन, एब्जॉर्ब कार्बन विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट द थिंग इज कि आपने अब उसके काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया, उसकी एबिलिटी को बढ़ा दिया, उनकी ग्रोथ इनहेंस कर दी आपने, अब वो ज्यादा काम करेंगे। समझे? ओके, ठीक है जनाब, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना यहां तक? ओके, नेक्स्ट यू राइट, नेक्स्ट टेक्निक यू राइट, लिखो इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस, दूसरा लिखो इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस, दूसरी चीज लिखो इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, ओके, इसमें लिखो थोड़ा सा, these are theoretical engineering techniques, theoretical engineering technologies based on the idea that these are theoretical engineering technologies based on the idea that plants and algae, particularly trees and crops, particularly sorry, please, I am repeating, okay. These are theoretical geoengineering technologies based on the idea that plants and algae particularly trees and crops like rice, wheat, cotton can be particularly trees and crops like rice, wheat and cotton can be genetically modified to absorb and metabolize
मेटाबोलाइज, अरे जो खाते पीते हो आप उसकी सबकी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, प्रोसेसेस दैट आर देयर इन द ऑर्गेनिजम्स, ओके, मेटाबोलाइज and therefore store more CO2 and therefore store more CO2 and therefore more store more CO2, okay, हो गया, okay, next you write ocean, एक मिनट रुकना, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, ocean fertilization, okay, next you write ocean fertilization, okay, ocean fertilization ocean fertilization, इसमें लिखो it refers to dumping it refers to dumping iron, it refers to dumping iron, ब्रैकेट में लिखो as powdered iron sulfate, as powdered iron sulfate, as powdered iron sulfate, as powdered iron sulfate, bracket close, or other nutrients, for example urea, into the ocean, for example urea into the ocean in areas, with low biological productivity, into the ocean in areas with low biological productivity, into the ocean in areas with low biological productivity, in order to stimulate phytoplankton growth, in order to stimulate phytoplankton growth, in order to stimulate phytoplankton growth, okay, now you can at that particular point जो भी हमने phytoplankton से related किया था, enhanced photosynthesis वगैरह सब है ना, please link that thing, okay, अब next लिखो seaweed farming and biomass sinking, next लिखो seaweed farming and biomass sinking, seaweed farming and biomass sinking, okay, next लिखो seaweed farming and biomass sinking, इसमें लिखो these schemes involve the industrial cultivation of seaweed, these schemes involve the industrial cultivation of seaweed to remove CO2, industrial cultivation of seaweed to remove CO2 from seawater, of seaweed, okay, to remove CO2 from seawater, ठीक है, full stop, the seaweed is then sunk, SUNK, sink, sank, sunk, okay, third form of sink, okay, sink, sank, sunk वाली है ना, sunk in deep ocean where it is claimed that captured carbon will remain locked on the sea floor, where it is claimed that captured carbon will remain locked on the sea floor for hundreds of years, or it is to be used to create products such as
biofuels to create products such as biofuels, fertilizers, and animal feed. Fertilizers and animal feed. क्या लिखा है मैंने? Biofuels, fertilizers, and animal feeds. Okay, so these are the few methods that are there. Okay, ठीक है. Okay, we will start. Okay, so these are few techniques that we have discussed under this particular enhancing the natural processes. Okay, then you write something about the direct air capture. Okay, just 1 or 2 lines, and then we will move to the next topic, direct air capture. Okay, you human interventions now. Okay, you write about that thing. Okay, you please write. It aims to extract इसमें human interventions में. Okay, it aims to extract CO2 and other greenhouse gases from the atmosphere. It aims to extract CO2, extract is XTRACT. Okay, extract CO2 and other greenhouse gases from the atmosphere by chemical and mechanical means. By chemical and mechanical from the atmosphere by chemical and mechanical means, comma, generally using a chemical sorbent. Generally using, please here, generally using a chemical sorbent. Here file SORBENT. Okay, generally using a chemical sorbent and large fans FANS. Okay, fans to move air through a filter. Okay, full filter. Okay, through a filter. Okay, then you write the CO2 can then be the CO2 can then be okay, can then be compressed and injected into geological formations. Deep underground, or used for other purposes, such as enhanced oil recovery, or production of oil recovery, or production of biofuels. Okay, I will rephrase this thing. Okay, I will rephrase this thing. Okay, actually I wanted to do something. Okay, जो थोड़ा सा आपका और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, क्योंकि आप लोग अब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हो, मुझे लग गया पता. रिमूवल. ओके, नेचुरल रिमूवल. ओके, आई विल रिफ्रेश दिस. यू प्लीज डू दैट थिंग. ओके, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ. क्योंकि आपको अब दिक्कत आएगी. दिक्कत क्यों आएगी? अब आप मिक्सअप करने लगोगे चीजों को. ठीक है, रिमूवल, इनहेंसिंग द नेचुरल प्रोसेसेस. ओके, एंड दोनों में ही ह्यूमन इंटरवेंशन है. दोनों में ही क्या है? ह्यूमन इंटरवेंशन है. ठीक है, बट आई वांट टू डू दिस इन दिस पर्टिकुलर वे. ओके,
आई शुड हैव डन इट अर्लियर बट तो मैंने ध्यान नहीं दिया. एंड द डायरेक्ट एयर कैप्चर ओके, डायरेक्ट एयर कैप्चर. ओके, नाउ प्लीज यू डू दिस मच ऑफ चेंजिंग, बस बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. कौन सा? हाँ, यहां पर ये चेंज कर लो. दोनों में ह्यूमन इंटरवेंशन है. मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अब आप लोग इस चीज को कंफ्यूजन ना क्रिएट करो. पहला इसलिए रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. देखो प्लीज लिसन. ओके प्लीज लिसन. क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं? रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. पहला ये है आपका क्या है? रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. दो तरीके से रिमूव करना है. इनहेंसिंग द नेचुरल प्रोसेसेस, दैट आर देयर. एंड दूसरा डायरेक्ट एयर कैप्चर बाई chemical and physical means. Okay, direct air capture by chemical and physical means. Please do this much of changing. Okay, it will be more clear. Okay, please do this much. Okay, I am sorry for that. आप लोगों को थोड़ा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन you please do this much of the correction. बस बाकी कुछ नहीं करना है. Okay, it will be more easy for you to understand. Okay, बाकी कुछ नहीं है. मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया. ठीक है. ओके, यू अमान प्लीज डू दिस मच ऑफ चेंज. ओके, ओके अमान, सुन पा रहे हो ना आप? ओके, डू दिस मच ऑफ चेंज. पहला की रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, इनहेंसिंग द natural processes and direct air capture by chemical and physical means. And the second is capture at source, जो हमने पहले डिस्कस किया है. capture at source. okay, okay, do this much of change. सबने कर लिया, ठीक है. और जो भी आपने डिस्कस किया that was the direct air capture. okay, प्लीज, ठीक है, प्लीज बी पेशेंट. कुछ नहीं हुआ है, इतना सा काम करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा. ठीक है, यू डू दिस मच चेंज. बस हो गया सबका, ताकि मैं आगे बढ़ूं. नो, प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, थोड़ा सा माइंड में एडजस्टमेंट करो फिर से कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है. आप रिमूव कर सकते हो बाई कैप्चरिंग एट द सोर्स इटसेल्फ, जो आपने पहले डिस्कस किया, ऊपर हमने किया कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज वाले मैकेनिज्म सारे के सारे. ओके, और दूसरा आपका आता है रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. क्या आता है आपका? रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑलरेडी देयर इन द एटमॉस्फेयर. और उसमें आपके पास दो तरीके आते हैं कि आप नेचुरल प्रोसेसेस को इनहेंस कर दो. इनहेंसिंग द नेचुरल रिमूवल प्रोसेसेस. अगर और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो इनहेंसिंग द नेचुरल रिमूवल प्रोसेसेस. ओके, जो आपने ये सब डिस्कस किया, ठीक है. और उसके बाद डायरेक्ट एयर कैप्चर बाई केमिकल एंड फिजिकल मीन्स, जो अभी मैंने लिखवाया. इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? अरे बोलो, हो गया? ठीक है. नाउ वी विल, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा. कैप्चर एट सोर्स ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. वो जो पर सारा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, वो सब जो काम किया है, प्री कंबस्शन, वो जहां जहां स्टोर करना है. लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जब आप डायरेक्ट एयर कैप्चर कर रहे हो, डायरेक्ट एयर कैप्चर मींस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यार. ओके, जब आप उसको कैप्चर कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ठीक है, वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस सारा का सारा वही करने के बाद, लेकिन फर्क इतना सा है, एक आप कर रहे थे सोर्स पे, और दूसरा आप कहां पे कर रहे हो? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से. और लेकिन जब आपने वहां से फिल्टर किया, रिमूव किया, उसको कंप्रेस करोगे, लिक्विफाई करोगे, तो अगेन वही काम होगा. आपको स्टोर करना पड़ेगा जियोलॉजिकल स्टेटा में, या ओशंस में, या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, या फिर मिनरल कार्बोनेशन के लिए. इज दैट क्लियर? और ये वाली जो चीज हो रही है, नेचुरली जो हो रहा है, आपने इनहेंस किया, अब वो वहीं पे स्टोर करेगा जहां पे उसने करना है, जहां पे वो पहले कर रहा था. समझे आप लोग? समझे? यहां तक क्लियर है? ओके, सो दीज आर द मेथड्स. आई विल कम टू द सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन. ओके, प्लीज राइट समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर. हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, पहला लिखो सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन. ओके, सोलर रेडिएशन
modification, solar radiation modification. Okay, solar radiation modification. Okay, solar radiation modification. Under this, पहला you write cirrus cloud thinning, I think. Let me check. Cirrus cloud thinning. Cirrus cloud thinning. Okay. Okay. इसमें लिखो, इसमें लिखो. What are these cirrus clouds? Listen. What are these cirrus clouds? These are the high altitude clouds that are there. देखते हो ना, हमने काम किया इस पे. You too might not be knowing that thing. Okay, Aman, I think he knows कि क्या है cirrus clouds, क्या होते हैं आपके पास. Okay, these are the different categories. There are different categories of clouds. There are low clouds, there are middle clouds, and there are high clouds. One of the high clouds is the cirrus cloud. Okay, ठीक है. So the first technique under solar radiation modification is the cirrus cloud thinning. Okay, okay. लिखो इसमें releasing substances at high altitudes, releasing substances at high altitudes that thin cirrus clouds, releasing substances at high altitudes that thin cirrus clouds. Some researchers have proposed that thin, okay, THAN, thin cirrus clouds, comma, some researchers have proposed that more heat could be allowed. Some researchers have proposed that more heat could be allowed to escape into space. More heat could be allowed to escape into the space, thereby cooling the climate. Okay, okay, okay. Thereby cooling the climate. Okay, so there are certain chemicals that can be used, certain materials that can be used to thin these clouds. Certain chemicals. Okay, they may react with the cloud और उनको क्या कर लेंगे, थिन कर लेंगे. उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो ट्रैप्ड हीट है that will be released into the space, और जो आपके पास air temperature that has risen, that can be brought down. One technique. Okay, next you write marine cloud brightening. Okay, next you write marine cloud brightening. Okay, marine cloud brightening. इसमें लिखो spraying salt water aerosols into clouds so that they reflect more sunlight. Okay, full stop. It aims to increase the whiteness of clouds. Okay, it aims to increase the whiteness of clouds in order to reflect more sunlight back into space. Okay, इसमें एग्जांपल लिखो. फॉर एग्जांपल, spraying a fine mist of sea water. Into low-lying marine clouds to create more cloud condensation nuclei
to create more cloud condensation nuclei, to create more cloud condensation nuclei, which would allow more vapor to which would allow more vapor to condense, which would allow more vapor to condense and brighten the clouds, and brighten the clouds. More vapor to condense, weapon nahi, vapors to condense and brighten the clouds. Okay, and brighten the clouds. This is one of the techniques. Okay, full stop. फिर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी यार, ठीक है। पहले लिख लो, लिखने काम खत्म करो। तीसरा लिखो, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शंस। तीसरा लिखो, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स इंजेक्शन, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स इंजेक्शन। ओके, इंजेक्शन ये नहीं जो आप लोग जब बीमार होते हैं वो लगता है, वो वाला नहीं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ओके, लिखो, स्प्रेइंग SO2 and SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 नहीं कर देना। स्प्रेइंग सल्फर डाइऑक्साइड कि लिखना ही है, बोला जब बोला लिखना ही है तो SO2 लिख लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, स्प्रेइंग सल्फर डाइऑक्साइड and other aerosols into stratosphere to block the sun rays, ओके। यहां बस एक ही लाइन, ठीक है। आई विल डिस्कस दिस थिंग विद यू गाइज। ओके, नेक्स्ट लिखो, सरफेस अल्बिडो मॉडिफिकेशन and Arctic ice management, ओके, लिखो, फॉर एग्जाम्पल लिखो इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लिखेंगे, समझ जाओगे आप, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स to reflect more light genetically engineered crops to genetically engineered, okay, genetically engineered crops to reflect more light, clearing boreal forests in snow covered areas, ओके। पहला लिखो, दूसरा एग्जांपल लिखो, कवरिंग लार्ज डेजर्ट्स और ice areas with reflective material to whitening mountain tops, whitening, okay, widening नहीं करना, whitening सफेद करना है, whitening, okay, WHITENING, okay, whitening mountain tops and roofs with white paint, etc. Okay, and roofs with white paint, etc. Now listen, please listen. Okay,
Cirrus cloud thinning, you know what is that cirrus cloud thinning? मैंने बताया आपको. This marine cloud brightening, if you guys could recall, when we were discussing these aerosols, I told you that these aerosols act as the cloud condensation nuclei. Okay, and to generate more clouds, to create more clouds, you need more condensation nuclei. Once you inject the aerosols into low-lying clouds over the marine areas, these aerosols will act as cloud condensation nuclei. More clouds will be formed, and those clouds that are formed, okay, more intense clouds that are formed, they will lead to more reflection of the incoming solar. हाँ, क्लाउड सीडिंग जैसा ही समझो. क्लाउड सीडिंग तो डिफरेंट चीज है, ठीक है कंसेप्ट वैसा ही है. हम उसमें रेन बेरिंग क्लाउड्स के लिए काम करते हैं, ठीक है. ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि अब आपके पास आपने क्या किया, वहां पे एरोसोल इंजेक्ट किया. एरोसोल इंजेक्ट करने के बाद नाउ दिस विल एक्ट एज द क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई. मोर क्लाउड्स होंगे तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी. क्या होगी? रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी. अब कंसेप्ट क्यों मैरीन क्लाउड्स पे हम क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक तो पहला है वाइड स्ट्रेच है, आपके पास ओशनिक एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो. तो जब आप पूरे एरिया पे अगर कुछ काम कर लोगे लो लाइंग क्लाउड्स पे, ठीक है, और वहां पे आपके पास वेपर भी तो है. इस चीज को समझो ना यार. ओशनिक एरिया में क्यों फोकस कर रहे हैं हम? ठीक है, हमने क्यों नहीं कहा कि टेरेस्ट्रियल एरिया में आके करो. ओशनिक एरिया में इसलिए हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जब आपने एरोसोल्स वगैरह इंजेक्ट किए, वेपर है, वेपर जब आएगा, ठीक है, कूलिंग जब होगी, तो जब उसको कंडेंसेशन न्यूक्लियर मिलेंगे तो मोर इंटेंस ब्राइट क्लाउड आपके पास बनेंगे नहीं बनेंगे? Those bright clouds will now reflect the sunlight. और जब सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगी. मतलब प्रपोज थ्योरी है, कुछ है नहीं, ठीक है. दीज आर द जस्ट प्रपोज्ड मेथड्स कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है. उसी तरह आपके पास स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शंस. ओके, इफ यू गाइस कुड रिकॉल, मैंने क्या कहा था? एरोसोल्स आर, इफ यू टॉक ऑफ लोकेशन, ओके, लोकेशन बेस्ड एरोसोल्स टू टाइप के आपके पास. एक है आपका ट्रोपोस्फेरिक, दूसरा आपका क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक. लेकिन मैंने आपको यह भी साथ में कहा था कि ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल्स बहुत जल्दी आपके क्या कर जाते हैं? उनका लाइफ टाइम कम होता है. दे स्टे फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन इन द एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फेरिक क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रेसिपिटेशन वगैरह होगी तो उसके साथ वो नीचे आ जाएंगे. लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल की, तो दे स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. दे स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो एक प्रपोज थ्योरी है कि अब आप डायरेक्ट एरोसोल्स लेके इंजेक्ट कर दो कहां पे? स्ट्रेटोस्फेयर में. और अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरोसोल फॉर्मिंग कंपाउंड इज द सल्फर डाइऑक्साइड. याद होगा अगर मैंने क्या कहा था? SO2 reacts with this and it forms H2SO4. SO2 as such is not a aerosol. Remember, SO2 as such is not a aerosol, but it leads to formation of the secondary aerosols. याद है कुछ? प्राइमरी एरोसोल, सेकेंडरी एरोसोल पढ़ोगे तो याद होगा ना. नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद होगा? सेकेंडरी एरोसोल फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है किसकी? SO2 की. तो जब आपने SO2 स्ट्रेटोस्फीयर में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया, उसके साथ बाकी एरोसोल्स भी आपने इंजेक्ट कर दिए, तो अब क्या होगा? आपको पता है कि वहां पे ज्यादा देर के लिए रहेंगे और वो क्या करेंगे? इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे. जब ब्लॉक करेंगे तो आपका कूलिंग अचीव होगी. प्रपोज्ड है यार सब कुछ हो नहीं रहा. उसके बाद आपके पास सरफेस एल्बिडो मॉडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस मैनेजमेंट. अब ये कह रहा है कि जहां जहां आपके पास स्पेसिस हैं, आपके पास रूफ टॉप्स हैं, आपके पास माउंटेन टॉप्स हैं जो वेजिटेटिव नहीं है, ठीक है, अब उन सबको क्या करना स्टार्ट कर दो? व्हाइट पेंट करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, छत पे व्हाइट पेंट करना स्टार्ट कर दो. क्यों? छत पे व्हाइट पेंट करने से क्या होगा? और कई जगह पे टेक्निक एक्चुअली देयर पीपल आर यूजिंग दिस टेक्निक. ओके, अक्रॉस द सिटीज कई जगह पे लोग कर रहे हैं ऐसा काम कि दे आर पेंटिंग दियर छत विद व्हाइट पेंट. ओके, और दैट लीड्स टू द डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है ना. ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग, दैट इज की सरफेस एल्बिडो मॉडिफिकेशन. आपने सरफेस की एल्बिडो को मॉडिफाई कर लिया. उसके बाद कहता है कि इन द बोरियल फॉरेस्ट आप क्या करो? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या करो? प्लांट करो. और जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और ऐसे बनाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सनराइज क्या करें? रिफ्लेक्ट करें. लेकिन पॉसिबल है क्या ऐसा? बहुत कैपिटल इंटेंसिव है. जस्ट एक प्रपोज थ्योरीज हैं, ठीक है. उसके बाद एक और बात बोल रहा है कि आप जितने भी स्नो कवर्ड एरियाज हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, उनको उस चीज से कवर करो जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए काम करें. समझे? सो वास्ट स्ट्रेच ऑफ डेजर्ट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई द
इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कवर करोगे तो दैट विल रिफ्लेक्ट मोर इनटू द स्पेस। इज दैट क्लियर? और जब आपका अर्थ पे आएगी नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करेगी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को, नहीं करेगी ना। जहां जहां पे आपने उसको रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन की प्रॉब्लम थी वो तो आपने पहले खत्म कर दी ना। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, वही ज्यादा ब्लॉकेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है किसकी? लॉन्ग वेव रेडिएशंस की। इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए इतनी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं इनकी, समझे। लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ इमिट करेगी उसको ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अब आपने क्या किया, जो लाइट आ रही थी उसी को रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो लॉन्ग वेव नहीं ना बनेगी। अब वो लॉन्ग वेव तो तब बनेगी जब अर्थ हीट अप होगी फिर एमिट करेगी। तो लेकिन जैसे आ रही थी उसी को रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो इनकी ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम हो जाएगी, जो ये आपकी कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सो दीज आर द प्रपोज्ड मेथड्स दैट यू कैन यूज टू alter the Earth's climate, and this is the geoengineering. This is the geo means Earth, and engineering means to alter the Earth's climate using these methods. Okay, we have seen that under these geoengineering methods both are there कि आपने एक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एट सोर्स, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द ह्यूमंस through chemical or physical means, and also we have seen that we can enhance the natural carbon removal processes. Like आपने क्या देखा? अपवेलिंग का केस देखा, आपने देखा ना। आपने उसके बाद क्या देखा? हमने क्या कहा कि आप ओशन फर्टिलाइजेशन करो, ऐसे प्लांट्स क्रिएट करो जो जिनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी बहुत ज्यादा हो। सो दीज आर द प्रपोज्ड मेथड्स। ओके। वन लास्ट पॉइंट यू राइट। Lately, researchers have suggested that spraying millions of tons of diamond dust. Researchers have suggested that spraying millions of tons of diamond dust in the upper atmosphere. Okay, this is a separate point. Okay, in the upper atmosphere, millions of tons of diamond dust, okay, in the upper atmosphere could be an effective way of cooling down the earth. And fixing the problem of global warming. Okay, so this is also that it is also proposed. लिख लिया सबने? Problem of global warming. Okay, now you see one more innovative method. डायमंड डस्ट लो, अपर एटमॉस्फेयर में स्प्रिंकल कर दो। अब देखो, क्यों नहीं बोल रहा कि लोअर एटमॉस्फेयर में स्प्रिंकल करो यार? एक चीज तो सोचा करो ना कि लोअर एटमॉस्फेयर में करोगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन सब नीचे आएगा सारा। जब अपर एटमॉस्फेयर में हायर रीचेज में स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह में जाके आपने इंजेक्ट कर दिया, तो वो काम जो प्रेसिपिटेशन के साथ होना था अब वो नहीं होगा, वहां पे ज्यादा देर के लिए रहेगा ना। और जो आप चाहते हो वो होगा। आप क्या चाहते हो कि मैक्सिमम सोलर लाइट क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। सो दीज आर, यू सी, वन थिंग you must be able to understand now कि most of the methods that are there are the proposed methods, or in the nascent phase of technological development. Most of them are nascent, but these are the different proposed methods that you can use to alter the Earth's climate. क्यों? क्योंकि अब humans तेज हैं, ठीक है, ते चाहते हैं कि हम ऐसे ही डेवलपमेंट करते रहें, अपनी मनमानी करें, तो उनको कुछ तो चाहिए ना जिससे इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जाए। सो दीज आर ऑल द मेथड्स दैट आर देयर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेथड्स दैट आर देयर आर प्रपोज्ड वन। मतलब रिसर्चेज हुई हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, काम हो रहा है, लेकिन दीज आर द प्रपोज्ड मेथड्स। इन रियलिटी डिप्लॉयमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, इसमें एक डिप्लॉयमेंट है, एक बात याद रखना कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, डायरेक्ट एयर कैप्चर भी होता है, वो सब चीजें हैं। बाकी जो मैंने ये बातें की ना, ये थोड़ी सी काल्पनिक है, ठीक है। ये थोड़ी सी काल्पनिक है,
मतलब काल्पनिक नहीं है इन दैट सेंस, बट इनकी प्रेजेंट स्केलेबल जो इनका स्केलेबल अप्रोच है वो बहुत कम है। समझे आप? क्यों? पहली चीज देखो, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता, पहली चीज, ठीक है, कुछ भी इंपॉसिबल, समडे यू माइट सी, हमने कोई और देखेगा, यू माइट सी अगर ऐसा चलता रहा कि इनमें से बहुत सारी चीजें विल बी डन बाय द ह्यूमंस, बट द प्रॉब्लम इज कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, दूसरा दीज थिंग्स में कॉज द पोल्यूशन, तीसरा टेक्नोलॉजिकली बहुत नेसेंट फेज में है, और ग्लोबली स्केल अप कर पाना इसको बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्केल एज वेल, कि आप स्केल अप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, स्केलेबल है या नहीं है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। एंड नाउ यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस दैट आर देयर रिलेटेड टू द डायरेक्ट एयर कैप्चर, रिलेटेड टू द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, रिलेटेड टू द नेचुरल enhanced natural removal process of carbon. Okay, apart from that you must be able to understand what are the limitations related to the solar radiation modification. Is that clear? And now you know what is geoengineering. Now you know what is geoengineering. एक और है कि पूरे सहारा डेजर्ट पे आप मिरर लेके लगा दो, और लगा दो ना यार, मिरर लेके पूरे सहारा डेजर्ट पे लगा दो, जहां जहां डेजर्ट्स हैं आपके पूरा एरिया कवर कर लो, डेजर्ट्स में राजस्थान का थर्ड डेजर्ट जो है वो कवर कर लो मिरर से, तो रिफ्लेक्शन तो हो जाएगी ना। मिरर आल्सो रिफ्लेक्ट्स यार, ऐसा नहीं ना है, और उसकी और इंटेंसिटी उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है ना, बट स्केलेबल है क्या? सोचो इस चीज को, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना। So with this we are done with the different techniques that you have seen, and I think we are done with the climate change. Okay, if something new comes up, so you please go through that. Okay, but I have made you capable of understanding the different dimensions, understanding that what are the these effects of climate change, what is the global parlance that is being undertaken. Okay, what are the achievements, what are the proposed techniques, what are the techniques related to adaptation, what are the different schemes there. Okay, we have discussed these things in so much detail ki I don't think you will face any difficulty in doing your current affairs, and it has laid a very good foundation for your understanding ki what is to be done, what needs to be done, what different things mean. Okay, so with this I will close this climate change topic here, but if something comes up, okay, if something comes up, जब तक तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो, तो I will take that up later on also, don't worry. Okay, if something comes up, something related to current affairs that demands attention. Okay, ऐसा नहीं है कि अब कोई ऐसी करंट अफेयर जो पिछले साथ ही जुड़ी हुई है, बट अगर कुछ न्यू आता है तो I will take that up. Okay, don't worry, but you please go through what we have done so far and try to understand the things, try to develop the linkages, okay, that are there. जो मैं बार बार कहता हूं कि try to develop the interlinkages that are there. Okay, ऐसा नहीं है, isolate नहीं करना है, अब खुद से भी काम करना है, and you guys can refer. Okay, and I think you should refer that Shankar IAS की वो जो environment का publication है उनकी, किसकी environment की publication है उनकी एक, ठीक है, you please go through that book for the basic understanding. फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसमें से बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं कवर होंगी, या होंगी भी तो बहुत स्पोरेडिक होंगी, बहुत स्कैटर्ड वे से डिस्कस की होंगी, ठीक है, बट प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दैट बुक नाउ, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स। अब ये नहीं बोलना कि सर करंट अफेयर्स समझ नहीं आ रही एनवायरनमेंट की, आ जाएंगी, अब इतना काम हमने कर लिया है। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होती जाएगी। इज दैट क्लियर? बाय द एंड ऑफ दिस series on lecture series, or here वो web series नहीं, lecture series on that environment and ecology component, you will be able to understand most of the dimensions that are there in the environment and ecology. ठीक है, बाकी घबराना नहीं है, ठीक है, you please work, I am here, ठीक है, बस तुम लोग काम करो, ठीक है, you please start the next topic. Okay, now अब आपकी मर्जी है, एक दो पेज छोड़ना चाहते हो या तीन पेज छोड़ दो, छोड़ दोगे तो बेहतर रहेगा, दो तीन पेज छोड़ के काम करो। वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि ओजोन डिप्लीशन का भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से लिंक है, तो वी विल डिस्कस दैट लेटर। ओके, यू कैन यूज दैट हियर, जब हम करेंगे तो आई विल ट्राई टू टेल यू कि कहां से क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप फिर से देखोगे कि दे आर द पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेज, एंड आपने देखा भी है, CFCs हो गए, HFCs हो गए, जब हमने ग्रीन हाउस गैसेज डिस्कस की थी, तो अब ओजोन डिप्लीशन में उनका अपना रोल है CFCs का, और एट द सेम टाइम वो आपकी पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेज भी है, और उनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो आप देखोगे, बट उससे आप लिंकेजेस डेवलप कर सकते हो।
आप क्या कर सकते हो, लिंकेजेस डेवलप, बट अब ऑल टूगेदर आप देखोगे तो दिस इज अ न्यू टॉपिक। ओके, कहीं ना कहीं लिंकेजेस हैं, ठीक है, वो लिंकेजेस आपको बायोडाइवर्सिटी में मिलेंगी, वो लिंकेजेस आपको फॉरेस्ट में मिलेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज बार 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 यूज नहीं करूंगा, समझे आप। वो लिंकेजेस हर टॉपिक में मिलेंगे आपको, जब एयर पोल्यूशन करेंगे तब भी मिलेंगे आपको, जब हम वाटर पोल्यूशन करेंगे तब भी आप लिंकेजेस डेवलप कर सकते हो। आप कहीं भी लिंकेजेस डेवलप, प्लीज लिसन, आप कहीं भी लिंकेजेस डेवलप कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे आप तब भी लिंकेजेस डेवलप कर सकते हो, लेकिन अब स्पेसिफिकली बोलोगे कि क्लाइमेट चेंज का कंपोनेंट जो आपका, नो दैट इज डन। ओके ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ओजोन एंड ओजोन डिप्लीशन। ओके, ओजोन एंड ओजोन डिप्लीशन। अब इसका लेआउट समझ लो, टॉपिक का जो पूरा लेआउट रहेगा, ठीक है, कैसे रहेगा, लिखना कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ समझ लेना, मैं बोलूंगा सुनना चुपचाप, ठीक है। पहला रहेगा कंसेप्ट ऑफ ओजोन, हाउ दिस ओजोन फॉर्म्स, हाउ दिस ओजोन फॉर्म्स। ओके, डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द लोकेशन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन, और दूसरा क्या रहेगा आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका रहेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज, नहीं उसके बाद हम एक और चीज करेंगे, द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओजोन इन बोथ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, वेरी ब्रीफ on that particular aspect also, and how this ozone changes over the seasons, how this ozone changes over the seasons। क्योंकि जो समर में होगा वो विंटर में नहीं होगा, जो विंटर में होगा वो ऑटम में नहीं होगा, जो स्प्रिंग में होगा वो समर में नहीं होगा। ओजोन की कंसंट्रेशन मतलब हर जगह नहीं, कुछ एरियाज में थोड़ा सा कांस्टेंट रहती है, कुछ एरियाज में काफी ज्यादा चेंज करती है, वो चीज देखेंगे। एंड देन वी विल टेक अप द कंसेप्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन डिप्लीशन क्या है आपकी, ठीक है, what are the different factors that are responsible for ozone depletion, what are the global initiatives to tackle the problem of the this ozone depletion, and what India has specifically done related to the ozone depletion. And one last thing that I will take up is how this ozone is related to the climate change। okay, ये पूरा रहेगा इसी का, एंड आई थिंक एक या दो लेक्चर में इसको हम खत्म कर लेंगे, ठीक है, हो सके कल नहीं तो परसों इट विल बी डन। ओके, यू प्लीज राइट, यू प्लीज राइट, ठीक है अमान। एक्चुअली मैंने आपके साथ ये जियो इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं लेना था, लेकिन कई बार आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, फिर आप बोलोगे क्या है जियो इंजीनियरिंग, क्या है जियो इंजीनियरिंग, इसलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं करना था डिस्कस ये। ओके ओके, प्लीज राइट, ओजोन इज primarily found in two regions of the atmosphere, ozone is primarily found in two regions, okay, of the atmosphere, ठीक है। फर्दर लिखो, about 10% of the earth's ozone, about 10% of the earth's ozone is in troposphere, which extends from surface to about 10 to 15 kilometer, which extends from surface to about 10 to 15 kilometer altitude, 10 to 15 kilometer altitude। and what it tells you, we have this troposphere and its, please try to understand one thing, okay, ट्रोपोस्फेयर का जो ट्रोपोपाज है ना, वो कुछ ऐसा जैसा रहता है, ओवर द पोल्स कम हाइट रहती है, हियर ज्यादा रहती है, दैट्स व्हाई आई हैव बीन यूजिंग 10 to 15 किलोमीटर, समटाइम्स इट कम्स एज लो एज 7-8 किलोमीटर आल्सो। ओके,
ये आपका इक्वेटोरियल रीजन, बीच का जो ट्रॉपिक स्वेल का एरिया है, और जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाते हो पोल्स पे ट्रोपोपाज की हाइट कम रहती है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट डाउन हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है, कहने का ये मतलब है, समझे? ठीक है, जब हम करेंगे जियोग्राफी डिस्कस वहां पे करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, तब तक घबराना नहीं, लेकिन यहाँ तक ये पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, about 90% of the earth's ozone, about 90% of the earth's ozone, about 90% of the earth's ozone resides in, about 90% of the earth's ozone resides in the stratosphere, resides in the stratosphere. Okay, the next layer of the atmosphere. Okay, further you write, the part of the stratosphere, the part of the stratosphere with the highest amount of ozone, the part of the stratosphere with the highest amount of ozone, with the highest amount of ozone is commonly referred to as, is commonly referred to as ozone layer, is commonly referred to as ozone layer, is commonly referred to as ozone layer. ओके, ब्रैकेट में लिख लो, बिटवीन 15 एंड 35 किलोमीटर altitude, between 15 to 35 kilometer altitude. Okay, altitude. Okay, ठीक है, now you must know कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन नहीं है, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में भी है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है दैट इज वेरी लेस इन द ट्रोपोस्फेयर, एंड द टू रीजंस आर देयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर. वन इज द नेचुरल रीजन एंड द अदर इज human contribution because of the increased pollution. Okay, naturally ozone is part and parcel of the atmosphere, but okay, you see, naturally the amount of ozone that is there in the troposphere, it is very less, it is very less, but when it comes to the role of human, that concentration is now rising, that concentration is now rising because of the increased pollution. We will see लेटर ऑन की क्या है क्या नहीं है, बट यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दो लेयर्स हैं, दो डिफरेंट रीजन्स हैं जहां पे प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में. स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी 90% ऑफ द ओजोन प्रेजेंट है, और वो भी एक पार्टिकुलर लेयर में 10 to 35 किलोमीटर के बीच में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, सॉरी 15 to 35 किलोमीटर के बीच में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, किसकी? ओजोन की. इसका कहने का मतलब यह है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. Is that clear? Okay. Next, you write, ठीक है, next point you write, throughout the atmosphere, throughout the atmosphere, throughout the atmosphere, ozone is formed in, throughout the atmosphere, ozone is formed in multi-step chemical processes. Throughout the ozone, throughout the atmosphere, sorry, throughout the atmosphere, ozone is formed in, ozone is formed in multi-step chemical processes, multi-step chemical processes that are initiated by sunlight, that are initiated by sunlight, full stop. ठीक है, इसी में फर्दर लिखना, in the stratosphere, in the stratosphere, in the stratosphere, the process begins with, in the stratosphere, the process begins with, in the stratosphere, the process begins with O2 molecule, the process begins with O2 molecule being broken apart by, being broken apart by, being broken apart by, being broken apart by UV radiation, being broken apart by UV radiation from the sun, UV radiation from the sun, full stop, full stop. Next लिखो, in the troposphere, in the troposphere,
ozone is formed by a in the troposphere. Ozone is formed by a different set of in the troposphere. Ozone is formed by a different set of chemical reactions. Ozone is formed by a different set of chemical reactions is formed by a different set of chemical reactions that involve naturally occurring gases as well as those from as well as those from sources of okay, please wait. That involves naturally occurring gases as well as those from sources of air pollution, sources from air pollution. Okay.